Okay, very good evening to all of you. I hope that I'm audible to you. Am I audible to you? Okay. It took me a second to crack why a cat is there because you have to crack it. Hai na? Okay. So a lot of people are making fun of the screen, which they can see on their computer. And let's typically take this session in a very lighter vein, in a very lighter mode. Uh, two resources are available here as usual. You always see me as one of your resource, and I think Rahul sir will also be joining me because this is, I think, the last session pre-CAT with you guys. We'll not be able to interact with all of you in the same format. So we'll be talking on a very lighter vein. We'll be talking on a very lighter mode. Just keep yourself calm and composed. Keep yourself relaxed. And you have to just ensure that you guys go with a very strong mind. Okay. So, yes, sir is there. Good evening, sir. I welcome you. Good evening, everyone. So, just last interactive session with you before CAT, before your exam. I think I'll be going through a couple of points which are important with respect to preparation. And I have also prepared a 6 days plan for you. So let's say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, something like this. So this plan will also help you to unwind your entire preparation, what you've done so far. Hope you would have revised by now everything. Hope you would have taken a lot of mock tests and sectional tests, as we have discussed so many times in past. I mean, there is no much change required in your strategy. The only thing that you can do is that you can just look at the mistakes which you have committed in the past few MCATs or SAMCATs, and then probably see that the same mistake should not be repeated again when you are taking a test on 27th of November. Okay. So with this note, I start. Yes, that's very true. Last few days, and you have dreamt it so far. And if you can further dream it, you can do it. Believe me. It's not about your MCAT score. It's not about the past performance. It's not about what was your marks. It's not about, it's all about what is there in your dream right now. What is there in your brain right now. So with a strong mind and a good thoughtful brain, if you go, you'll be able to crack it. Believe me. Don't now look at the numbers or the marks that I was scoring. कुछ MCAS में ऐसा था वैसा था, उसको सब भूल जाओ, है ना. अभी सब लास्ट 6 डेज अपन नए तरीके से एकदम शुरुआत करेंगे और इसको बिल्कुल फिनिश मोड पे लेके जा रहे हैं. So you have to be very strong, not careful, very strong now for next 6 days so that you can handle 27th without any pressure. Just take it as another MCAT. Just take it as another SAMCAT, another sectional test, so that you can take the test. Okay. So over to you. Anything on this? See, there are two aspects to it now in the last 1 week. Some operational aspects, what you have to carry, how do you ensure that it's trouble-free in terms of going for the exam and writing the exam. And secondly, the more important is the mental aspect. Okay. Because there is nothing new to learn at this stage. It's all keeping yourself calm, composed, cool, focus on all the learning that you have done over the last few months or last 1 year, whatever. And obviously there will be some nervousness. So, but then you have to channelize that nervous energy into performing better rather than, getting psyched up. And that nervousness should not result in the exam, your performance going down in terms. So how do you channelize it in a positive manner? That is what you have to focus on in the last 1 week. Okay, as I said, there is nothing new to do now, no new areas to study. It's more about analysis. And again, what you've done, everyone makes mistakes, and you would have made a lot of mistakes while attempting test. And when you analyze, you would have realized kinds of mistakes. The important thing is, have we learned from those mistakes, and have we ensured that we do not repeat the kind of mistakes that we did? But that's what's most important. So what you can do is very quickly refresh the last few tests that you took. What kind of mistakes you made? Were they silly mistakes in your, in your hurry? You have not read directions carefully. You have done some simple calculation mistakes.
you have not been able to select the right question in your hurry, just seen the topic and skipped. So what are the kind of your time management has gone wrong? You've not been able to see all the questions within the given time. Whatever kind of things, you need to just ensure that you don't repeat those kinds of mistakes. So everything comes together in the CAT exam. And sure, whatever you have prepared, whatever efforts you've done, they will yield positive results. You will be able to give off your best on the D-Day. Kapil, so let's chalk out what you were saying, the next 1 week's program. Okay, so let's start with this pre-CAT 2022. Yes, rightly said. There are a few points that we have to keep in mind on the D-Day. There are a few points that we have to keep in mind a day before the exam. We'll be discussing those points one by one. But next few days, let us 6 days, you have to unwind yourself. You have to ensure that you are, again and again, I'm saying that you are mentally strong. Yes, do revise all important formulas. Do revise whatever you have prepared as your notes, because that's the most important tool right now at this stage. And whatever your strategy is now, please do not change it. That I scored. Today I was taking some one-to-one sessions where people asked me that, sir, we are not scoring in the last 2 tests. कोई बात नहीं. मतलब that doesn't mean कि अगर मैंने 2 टेस्ट में स्कोर नहीं किया लास्ट में तो मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दूं. Don't do that. Whatever is your strategy, you are firm on that strategy. Please go with that strategy. There is no requirement to do sudden experimentation at this stage. Stop preparing on the last 2 days of the exam. Just relax. I'll discuss. I'll share each day plan. Ensure that you know the location of the center, how you have to get to the center. Of course, Google location is there, but they have categorically mentioned the address mentioned on the admit card is final. Wherever Google takes you, we are not responsible for that. It is written in their CAT day circular. Keep your CAT admit card ID proofs in hand. Again, I'll describe this in detail also, but you have to keep these things in mind. Okay, so I think I'll start first with what you should do. I mean, that's a next 6 days plan. So let's say when I was making this plan, there is no as such pressure on you on padhai kind of a thing. It's just you have to take 1 mock on Monday. Okay. In case you're not in a mood to take 1 mock on Monday, you can revise the previous mock. That is, go through the questions of the previous mock, especially the mistakes which you have committed. And you can probably, from those mistakes, you can look at that, okay, I'll not be repeating these mistakes. Along with this, read newspaper editorials. That will really help you to improve on your reading base once again in the last few days and will keep you fresh. Tuesday, again, there is a possibility that you can analyze the mock of the previous day, or you can revise earlier mocks only, whereby you can use those mocks as question banks and again identify the mistakes that you will not repeat. Now, this day you can read some motivational book, some humorous articles. This will again keep your brain thoughtful, charged, and good thoughts will come to your mind. 23rd, take 1 mock. So Monday, Wednesday, we are taking 1 mock each. We can add to it that in case, let's say we want to take a sectional test, you can do that. Although I have written this on Thursday. Thursday, you are taking a sectional test on VARC. Then read articles of your own interest area on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Wednesday, you are taking a mock and you are analyzing the mock. Okay. You can also add sectional test to it on Wednesday. Then Friday, Thursday, VA sectional test, RC sectional test, read articles of your interest. Friday, revise all quant formulas, LRDI class notes, revise study material, short notes that you have prepared. Whatever key notes that you have prepared, you will have to give 2 days, Friday, Thursday and Friday. And Thursday, Friday, you will be revising through these keynotes. Any other question bank that you have prepared on your own, that is your own register, own notepad, where you have identified those questions which were Gada questions for you, which were either not attempted in the test or which were usually wrong. You can again go through, scan those questions also, so that during the exam day, you can just scan those questions and leave. So to make your elimination of questions strong, it is advisable that on Friday, you will probably go through your own booklet, your own register where you have such questions. 26th, Saturday, keep yourself motivated, watch some motivational clip, watch some motivational movie. General reading will also help you. Keep yourself happy.
सेल्फ हेल्प बुक्स में ऑल्सो हेल्प. सो जेनरिक रीडिंग करना है, बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम रात को 12 घंटे बैठ के पूरा रात पूरे दिन पढ़ेंगे तो सडनली कैट अच्छा हो जाएगा. You know this is an aptitude thing which you have polished around the year. You have tried your level best to polish it around the year. अब वो कितना पॉलिश हुआ कितना नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट आपको ये है कि हाँ ठीक है, मुझे लास्ट दिन करने से कुछ नहीं हो जाएगा. तो आप अगर 12 घंटा सैटरडे को पढ़ने का सोच रहे हैं, जैसे अपन एग्जाम्स में पूरा दिन पढ़ के रात पढ़ के अगले दिन वॉमिट करते थे, दिस इज नॉट द सेम सिस्टम. So you have to understand this. You are mature enough to understand this. And then Sunday, of course, that's your D-Day. That's your main exam. So you have to go and probably take the test. Whatever mock test on Monday and Wednesday you are taking, ensure that your mock tests are mock tests are in the same time slot as the time slot allotted to you on your admit card. Mayank has asked me a question. जिनका सेंटर दूर है, एक दिन पहले, एक दिन पहले अगर सिटी में ही तो जरूरत नहीं पड़ेगा. आई डोंट एडवाइज दैट, है ना. मतलब जयपुर इतना बड़ा सिटी नहीं है कि एक दिन पहले अपने को सेंटर के पास पहुंचना पड़ेगा. इतना कोई दूर सेंटर नहीं है. आई हैव गॉन थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल द सेंटर्स. सो यू प्रोबेबली ट्रैवल टाइमली, रीच ऑन टाइम. डोंट गो ऑन द लास्ट टाइम अलॉटेड, है ना. वो जो लास्ट टाइम अलॉटेड है वो मतलब दैट इज नॉट the correct way to look at it. जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, आप उस टाइम को देखना. आपके पास एक टाइम है, will not allow after this, तो आप उस टाइम को मत देखना कि will not allow after this, तो अपन उस टाइम पे पहुंचेंगे. बस इतना सा करना है. अगर आप टाइमली पहुंचते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है वहां जाके रिलैक्स करने के लिए. सो प्लस आपको अच्छा ये है कि you know the exact location, जो एड्रेस है, विदाउट एनी कंफ्यूजन. सिमिलर साउंडिंग नेम्स के मल्टीपल कॉलेजेस हो जाते हैं, मल्टीपल रोड्स हो जाती हैं, तो वो लोकेशन आपको 100% यू आर श्योर यू नो हाउ टू रीच, देन फाइन. अदरवाइज 1-2 दिन पहले कभी ना कभी हम चक्कर मार लें, देख लें व्हाट टाइम इट वुड टेक. अर्ली मॉर्निंग स्लॉट है तो जनरली ट्रैफिक कम रहेगा, लेकिन दिन का स्लॉट है तो ट्रैफिक भी हो सकता है. कभी हमारा व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, कभी कोई रोड पे डाइवर्जन हो गया. So all that margin has to be kept. It's a very very important exam for our career. तो उसमें होता क्या है, for some reason you get delayed, आप लास्ट मोमेंट पहुंच रहे हैं, तो जो एंजाइटी लेवल्स बिल्डअप हो जाते हैं वो उसके कारण प्रॉब्लम होती है. तो हम वो नहीं करें कि लास्ट मोमेंट पैनिक हो रहा हो हमें कि ये क्या होगा, हम टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं, वो हमें अलाउ करेंगे कि नहीं. कभी ये भी हुआ है, लोग वहां पहुंचे हैं सेंटर पे इन टाइम, और जब अंदर जाने लग रहे हैं तो आईडी प्रूफ का कुछ मैच नहीं हो रहा, एक्सपायर्ड है, दूसरा मंगाना पड़ रहा है, तो पैनिक में फोन हो रहा है घर से, कोई लेके आओ कुछ. सो सब कुछ हम इंश्योर करें कि बहुत कूल काम कंपोज मैनर में वहां जाएं. एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में सब चीजों में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप वहां पहुंचे एग्जाम सेंटर, जाते ही 5 मिनट बाद आपको हॉल में बिठाया और उसके 5 मिनट बाद एग्जाम शुरू हो गया. तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजरल टाइम, एंड वी शुड मेक गुड यूज ऑफ दैट टाइम फॉर आवर mental health, in the sense of being in that zone, in that positive attitude. That is very very important on that D-Day. See, it's two ways. Once you are at the exam center, अब आप वेट कर रहे हो कब खोलेंगे, सिक्योरिटी और जो उनके वो प्रोसीजर्स हैं, आईडी चेकिंग वगैरह, फिर वो हो रही है. फिर आप हॉल में जाके बैठ जाते हो, फिर भी वो वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह भी होना है, एक एक करके सबका कर रहे हैं, फिर टाइम लग रहा है. तो कभी 1 से 2 घंटे का टाइम हो जाता है. यू आर जस्ट वेटिंग. Now in that waiting, some people tend to get anxious and over anxious. तो पैनिक अटैक्स आने लगते हैं क्योंकि आप नेगेटिव सोचने लगते हो कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, अगर मेरा ये सेक्शन बिगड़ गया तो क्या होगा. यू स्टार्ट हैविंग नेगेटिव थॉट, तो नेगेटिव स्पाइरल बन जाता है. एंड वो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है बहुत डाउन हो जाता है व्हेन वी स्टार्ट द एग्जाम. रादर देन दैट, आपको कोशिश करके उस समय में वो जो 1-2 घंटे हैं अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है. Feeling that yes, I'll be able to give off my best. You have to imagine all those times when you got very good scores in the AIMCAT, in SAMCAT, and other tests. Whenever you have performed earlier well, it could be some board exams that you did well, some other exams. Just think back on those. उस समय मैंने क्रैक किया था एग्जाम, आज भी वही मौका है. I will do well. I'll be able to give off best. तो वो बार बार अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप देंगे. सो वो एक जो नर्वस एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ है, तो एग्जाम शुरू होते ही यू विल बी एबल टू
immediately jump into it with a positive mindset. So that's very important, those couple of hours which are there. And then during the exam, all said and done, हमने इतना आपको समझाया, आपने इतने मॉक्स दिए कि फिर भी जिसके लिए पहली बार हो रहा है, there is a possibility for some reason आपको एग्जाम देते हुए कुछ नर्वसनेस हो जाए कि ये तो इट्स नॉट लाइक व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट और इमेजिनिंग इट टू बी, थोड़ा सा मुश्किल हो गया कुछ है. सो टू थिंग्स, पहली चीज बार बार रिमाइंड योरसेल्फ, whatever is true for you is true for all those other 2 lakh plus candidates who are writing the exam. Every performance is not in absolute terms, it's always just in relative terms. So अगर कोई section tough आ गया है, unexpected types of questions आ गए हैं, okay, so don't worry, सभी के लिए ऐसा है, सिर्फ आपके लिए नहीं. आपने भी इतने एम कैट दिए, इतना प्रैक्टिस मटेरियल कर लिया, फिर अगर आपको कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग रहा है तो सबके लिए, whoever is able to handle that well, better than others will get better marks. So कभी भी इस बात से पैनिक नहीं करना है कि ये अलग क्या आ गया, हमने नहीं किया. चांसेस कम है कि कुछ अलग आए, लेकिन आ जाए तो जस्ट रिमेंबर इट इज ट्रू फॉर एवरीवन. सो नो नीड टू पैनिक. फिर भी अगर हमें लग रहा है सम पैनिक इज बिल्डिंग अप, सम एंजाइटी इज बिल्डिंग अप इन आवर माइंड, तो होपफुली आप लोगों ने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी कभी कभार थोड़ा बहुत प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा इस तरह की चीजें की होंगी. तो वहां पे भी हम डीप ब्रीदिंग तो कर सकते हैं, आंख बंद की, सोचा पॉजिटिव, सोचा एक डीप ब्रीथ किया, एंड देन गो बैक टू द टेस्ट. एंड ऑल्सो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, 3 टेस्ट हैं, तीनों अलग अलग सेक्शन, अलग अलग टेस्ट हैं. डू नॉट लेट वन सेक्शन परफॉर्मेंस अफेक्ट द अदर्स. हो सकता है कोई एक सेक्शन आपका, और मे बी फर्स्ट सेक्शन ही उतना अच्छा नहीं गया जो आप सोच रहे थे, तो फीलिंग मन में आने लगती है, क्योंकि कोई गैप नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप बाहर आ रहे हैं 10 मिनट रिलैक्स कर रहे हैं फिर अगला दे रहे हैं, एक के बाद एक आपको देना है. फिर फीलिंग आ जाए कि ओहो ये तो पेपर ही पूरा बिगड़ गया. ऐसा नहीं है, एक सेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ आपका जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. हो सकता है वो सेक्शन टफ हो, किसी का भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आपको वो खराब नहीं होना. तो आपको अगला सेक्शन बिल्कुल एक नया टेस्ट है, उस एटीट्यूड से देना है, और थर्ड सेक्शन भी उसी एटीट्यूड से देना है. क्या हुआ पिछले सेक्शन में, उसे हमने भूलने की कोशिश करके नए सेक्शन पे पूरे नए सिरे से फोकस करना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपार्टमेंटलाइज योर preparation and your exam strategy for each of the 3 sections separately. So it is very important to go with a positive attitude, rightly said. I mean, just forget the surroundings. Even during the exam, this is the process of the exam. There are a lot of people sitting next to you or sitting just beside you. Okay, you will find that they might show very excitement while doing the questions. You might feel कि अरे यार इसके तो सारे क्वेश्चन हो रहे लगता है. ऐसा होता नहीं है, वो पता नहीं कुछ लोगों को होता है, बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं पेपर देते थे. आप उनको देख के भी बिल्कुल परेशान मत होना. एंड राइटली सेड, प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव प्रिपेयर्ड. इफ इट इज टफ, you are finding it difficult, it is difficult for everyone. So the golden rule applies. Low attempt, high accuracy will play the magic. And if it is easy, then also it is easy for everyone. Then also बहुत high attempt ज्यादा helpful नहीं होता, क्योंकि कुछ भी इसमें easy नहीं होता. Choices will be dicey और वो slip करा देगी. तो जब हम choices में slip हो जाएंगे तो वहां गलत हो जाएगा, negative हो जाएगी. तो इसलिए वहां पे भी बहुत ज्यादा high attempt helpful नहीं होता. लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है निकल रहे क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए. And especially in VRC, you should have a logic, you should have a reason to mark the answer choice. And that is typically most important, okay? But always remember one thing, that whatever you are attempting, whichever section you are attempting, please keep track of the time. What would be right on the top right hand side corner. So keep track of that right side corner. That will really help you a lot. Another important thing is stick to your strategy. होता क्या है, स्पेशली जैसे VARC सेक्शन, सपोज आपने एक स्ट्रेटेजी की हुई है कि यू विल टेक 3-4 मिनट्स, यू विल स्कैन द इंटायर सेक्शन, यू विल चेक आउट द पैसेजेस, एंड देन यू विल वर्क आउट कौन सा पहले करना है. आप 4-5 मिनट लगाते हो और फिर शुरू करते हो. तो आपके जो नेक्स्ट बैठा है कोई स्टूडेंट, आपको दिख रहा है वो तो धड़ाधड़ अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए, वो स्क्रॉल हो रहा है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आप लोग अरे ये क्या हुआ, नजर तो जाती है, उसके तो 4-5 अटेम्प्ट भी कर लिए, मैं तो आई एम जस्ट रीडिंग, जस्ट स्कैनिंग, ओह आई एम मिसिंग आउट, मैं पीछे रह गया. ऐसा वो पैनिक नहीं करना है आपको. इसीलिए फोकस अपने ही पेपर पे करना है. मुझे कहा ना, फॉरगेट द सराउंडिंग जो लिखा है. आपकी जो स्ट्रेटेजी, जस्ट स्टिक टू दैट. डोंट वरी व्हाट द पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ यू इज डूइंग और व्हाट द पर्सन ऑन द राइट ऑफ यू इज डूइंग. Whatever your strategy you have firmed up over the last
couple of weeks फाइनल स्ट्रैटेजी कर ली है, जस्ट स्टिक टू दैट। उसी हिसाब से आपको पेपर टैकल करना है, उसको पार्ट्स में कर रहे हैं, स्कैन करके कर रहे हैं, किस तरह से टाइम अपने आप पूरा एडजस्ट कर रहे हैं कि हाउ डू आई गो थ्रू द इंटायर सेक्शन, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इन दिस लास्ट 1 week, see that your body clock is aligned to your time slot, that you are at your most awake and most sharp mentally in the time slot in which your exam is there. So आपकी sleep cycle, आपकी study cycle, सब कुछ उस time slot से aligned रहे। Hopefully you would already be doing that, last 1 week में और ज्यादा करें। वो ऐसा नहीं है कि नाइट आउट हो रही है पढ़ाई के लिए और फिर मॉर्निंग में वी आर फीलिंग अ बिट ड्राउजी। एंड इम्पोर्टेंटली थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती रहे, बिकॉज दैट इज अ चैनल टू लेट ऑफ योर नर्वस एनर्जी। एंड फिजिकल जब हम कुछ करते रहते हैं तो वो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, वो इवन आपकी मेंटल अलर्टनेस को और इम्प्रूव भी करता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो ऑब्वियसली ये नहीं है कि हम 2-4 घंटे जिम में बिताएं, बट थोड़ा हम जो भी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज भी करते हैं वो भी करते रहें, और ये टाइम स्लॉट्स का बहुत ख्याल रखें कि हमारा बॉडी क्लॉक थोड़ा इधर अलाइंड रहे। So exam slots, there are 3 exam slots, you are already aware: 8:30 to 10:30, 12:30 to 2:30, and 4:30 to 6:30. So 12:30 to 2:30 people, you have to reach, that is report at the time center at 11 a.m. and the guys who are in the first slot, they have to report at 7 a.m. So first slot guys, you cannot talk to anybody, but second and third slot guys, you can talk to your batchmates, your friends who have appeared in the first slot or in the second slot. Now, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको हमेशा आरसी का क्लासेस में बोला है that there is no right opinion, there is no wrong opinion. पेपर आसान है, पेपर कठिन है, ये एक ओपिनियन है, and this opinion would vary from an individual to individual. So you have to ensure that you do not talk to many friends in the previous slot. Just talk to one guy. Don't take his opinion. Just ask how many questions were there. Was it on the exactly same lines as we were giving our MCATs? Same model है 40 minutes का, वो तो है ही। Questions का 24, 20, 22. क्या RC में 16 है, VA में 8 है, और LR में कितना है, DI में कितना है, क्वांट में मेनली क्या क्या दिख रहा था? That's it. नो ओपिनियन ऑन डिफिकल्ट है, नहीं है, इजी है, नहीं है, मैंने फोड़ दिया, मेरे इतने आएंगे, मैं इतना अटेम्प्ट करके आया हूं, वो सारे गलत भी करके आ सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो डोंट रिलाई ऑन हिज ओपिनियन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इनफैक्ट सिर्फ ये मालूम होता है हमें, वो भी मेंटल एक थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मुझे मालूम है कि साहब मैं एक ऐसा टेस्ट देने जा रहा हूं जिसमें 16 क्वेश्चन आरसी के, 8 क्वेश्चन पीए के, या मैं एक ऐसा देके जा रहा हूं जिसमें 4 पैसेज आए या 5 पैसेज आए या 3 पैसेज आए। वो आपको सिर्फ एक मेंटली मालूम होता है, दैट्स इट, देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट। वो आप पूछ सकते हो उससे, बाकी क्योंकि पूछोगे आप, मुझे मालूम है, मैं मना करूंगा तो भी पूछोगे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ आपको पूछना क्या है। आप उससे मत पूछना तेरा कैसा हुआ, तुझे कैसा लगा। I mean, he is no one to judge on the difficulty level, at a neutral level. So please don't go on his judgment of difficulty level. Do not follow social media. उस समय वो क्या फर्स्ट स्लॉट के बाद से there are so many websites, so many small institutes and so many self proclaimed experts, तो तभी से एनालिसिस शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस के डिस्कशन शुरू कर देते हैं। प्लीज डू नॉट गेट इनटू दैट, देयर इज नो पॉइंट। अगर आपका थर्ड स्लॉट है कि पहले 2 स्लॉट में कौन से क्वेश्चन आए थे मैथ्स में और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या पैसेज किस टॉपिक पे था, उससे कोई लेना देना नहीं है। यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड प्लीज। तो इसीलिए कोई सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं जाना। एक आध फ्रेंड से सिर्फ बेसिक पैटर्न पूछ लिया कि यस इज इट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, ये जो ब्रेकअप है क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल। इंडिविजुअल क्वेश्चंस की डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको आपके ऊपर फोकस करना है। आपका पेपर एक यूनिक अलग आएगा, और स्लॉट्स में आया जो अलग आया था। जस्ट जनरली ये होता है कि हम इन जनरल डिफिकल्टी लेवल्स बैलेंस्ड होते हैं अक्रॉस द 3 स्लॉट्स, और फिर भी छोटा मोटा फर्क रह जाता है। कभी कोई सेक्शन किसी एक स्लॉट में थोड़ा सा ज्यादा इजी है, ज्यादा टफर होता है, दैट इज व्हेयर नॉर्मलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो हैव दैट बिलीफ कि the authorities will take care of whatever difference in terms of difficulty level across slots is perceived. That would also be taken care, because they'll see the actual performance of students. There will be say about 60 to 70,000 students writing in every slot. So that's a very large base. Statistical tools apply हो जाते हैं,
सो डोंट वरी एट ऑल, इस सेक्शन में ऐसा हुआ, उस सेक्शन में ऐसा हुआ, तो जस्ट रिमेन अनफेज्ड। आप लोग जो सेकंड स्लॉट वाले हैं, थर्ड स्लॉट वाले, जब वहां जाएंगे, आप पहुंचेंगे, चांसेस यही है कि वहाँ स्टूडेंट्स पहले स्लॉट, पिछले स्लॉट वाले वापस बाहर निकल ही रहे हैं, वहाँ कहीं लोग आपको मिल जाएंगे, तो उनके डिस्कशंस में आप शामिल मत होइए, बस ये सब। राइटली सेड बाय सर, सोशल मीडिया, ये यूट्यूब सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा 4:30 वाले स्लॉट के लिए, क्योंकि उसके पास में 2 स्लॉट निकल चुका होगा उससे पहले। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 4:30 PM वाला जो स्लॉट है वो देखता है, 3 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है। उसी को एक रिक्वेस्ट है, वो ज्यादा फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा बार बार, अच्छा अब देखता हूँ, पीपल विल स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, फर्स्ट स्लॉट कट ऑफ इतना जाएगा, इतना मार्क्स आएगा। दिस इज ऑल स्क्रैप, बिलीव मी, दिस इज ऑल स्क्रैप। कट ऑफ निकालना, मार्क्स जाना और एनालिसिस करना 2 से 3 दिन का काम होता है। एकदम से इतना आसान नहीं होता कि हम इतना जल्दी उसको अनाउंस कर दें, ठीक है। जब तक तीनों स्लॉट हो नहीं गए, तीनों स्लॉट का एनालिसिस नहीं हो गया, ठीक है, तो ये इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप उसको निकाल पाए एक ही स्लॉट से, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्लीज बी केयरफुल, वी आर जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि डोंट बी अ ट्रैप ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। Okay, so there are some do's for the candidates. I have taken some important do's for candidates which are there on their official website, because I'm sure that these are important and you might skip them. Chances are high that you will skip them. So first is, you have to print your admit card on the A4 size paper, preferably using a laser printer. Admit card is valid only if candidates' photograph and signature images are legibly printed. Okay, ensure that your photograph is printed properly, signature image is clear, so it has to be a clear print, number 1. Number 2, before leaving for the test center, ensure that you are carrying your original ID proof, valid ID proof, okay, valid ID proof here I am saying, and the printed admit card. Okay, admit card could be black and white, there is no essential need of making it a color print, it can be a black and white. Affix the photo in the space provided on the admit card before handing over the verification at the center. Affix the same photograph which was uploaded during the application process. जो आपने एप्लीकेशन में लगाया है, सेम फोटो का आपको प्रिंट चाहिए, आजकल में निकाल लेना और उसी को आपको उस एडमिट कार्ड पे लगाना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम फोटो होना चाहिए। They have full rights to say कि this is not the same photograph, we are not able to identify. Okay. Report at the test center based on the reporting time that you have received. I have already given you the deadline. Please don't go on the last time cut. Go on the first time cut, the reporting time. Somebody, in fact, a lot of people have asked this question on WhatsApp also. I am only saying, I'm answering this. Please don't ask this again. Please report on the reporting time. Don't go on the last cut. Last cut तक आपके पास में margin रहेगा, पंचर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो at least you have some time to arrange without panic, है ना? That's why it is important. इसमें कपिल, I would just like to add, अगर आप थोड़ा जल्दी वहां पहुंचेंगे, now what would happen is you may have to wait say maybe 15 minutes or half an hour before they start allowing entry. अब आप वहां खड़े हो, obviously you will find some friends, some acquaintances also, and then you start chatting with people. Again, remember, keep company of only those who are showing a positive attitude. Otherwise आप अलग हो जाओ, अपना ही फोकस रखो. It's not necessary. जनरल बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, फाइन. तो कीप योरसेल्फ इन गुड ह्यूमर, इन गुड थिंग. लेकिन कोई अगर ऐसे ग्रुप में आप हो और वहाँ वो सब नेगेटिव बातें शुरू हो जाए, अगर नहीं हुआ यार तो क्या होगा, इस बार कैरियर का ये है वो है, यू स्टार्ट फीलिंग देयर इज सम नेगेटिव वाइब, प्लीज इमीडिएटली अपने आप को अलग कर लो. ये लास्ट डे में, उस समय में जो हमारा मेंटल मेकअप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि हमें फोकस्ड रखना है. तो कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बातें हो रही हैं या कोई नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो एकदम उससे हम दूर हो जाएं, अपना फोकस रखें. वो लास्ट आधा एक घंटा ऐसा ना हो जाए कि वो हमको एक डीमोटिवेटेड सी सॉर्ट ऑफ फीलिंग या ज्यादा एंजाइटी बिल्डअप करा दे एग्जाम में अंदर घुसने से पहले. Okay, so there is a barcode which is printed on the admit card, है ना? वो ध्यान से रखना कि वो बहुत अच्छा सा एक उसका क्लीन सा पिक्चर आए बाहर, जिससे वो स्कैन हो जाए इजीली सेंटर पे. अगर उसको स्कैन करने में दिक्कत आती है, आई हैव नोटिस दिस कि बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, फिर वो दोबारा प्रिंट आउट लाने के लिए बोलते हैं. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक अच्छा प्रिंट लेके जाएं जिसमें बारकोड क्लियरली विजिबल हो. ओके, सो कंसोल होगा वहां पे आपका एक ऑलमोस्ट प्लास्टिक का पार्टीशन बना होगा ब्लू से कलर का, where you have to sit and computer screen would be there.
you have to use the mouse to select the right option answer for an MCQ question on the screen. Keyboard to answer a non-MCQ. Okay. On screen keyboard to answer a non-MCQ. आपका keyboard side में रखा होगा, आपको on screen keyboard use करना होगा उसको mark करने के लिए. Okay. The keyboard is not to be used, and using the keyboard can lead to your test getting logged. So please don't use that keyboard. It is very important. वो lock हो जाता है उससे. The candidate will be provided with one pen and one scribble pad. आपका एक mock test करना कराया था हमने एक center के ऊपर, तो वहां आपको एक pad दिया गया था. Exactly same size का pad, similar number of pages, which is usually given in conferences also. Same pad, same pages के साथ में आपको मिलेगा, and you'll be using that only to do your rough work. Okay. So you're not supposed to carry anything. They'll give you a pen, they'll give you a scribble pad. Okay. जब आप वापस बाहर निकलते हैं तो आपको scribble pen, admit card सब वहीं पे छोड़ के आना पड़ता है. ठीक है. आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे और कुछ भी लेके नहीं आएंगे. Admit card duly signed in the presence of the invigilator should be dropped in the box provided before leaving the test lab. So test lab के बाहर एक बॉक्स होता है, उसमें आपको अपना admit card डाल देना होता है, पैड और वो लोग आपसे कलेक्ट कर लेते हैं. Okay. Now, frisking of candidates is there, which is done with a handheld metal detector prior to the test center premises. Okay. Now, what is this? This is a security check. Okay. This is a security check where all candidates would be frisked. Now, separate canopy enclosure would be present for female candidates by female frisking staff. Only admit card, photo ID card, mask, sanitizer. Okay. And in case you need a scribe affidavit or you have a medical certificate, you have to carry that. Nothing else. Okay. Nothing else. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. They are very important. क्योंकि वो वहां जाके दिक्कत आती है, इसलिए मुझे मालूम है. Socks, plain pullovers, sweaters, cardigans without any pockets are allowed inside the test lab. Okay. I am again saying socks, plain pullovers, sweaters, cardigans without any pockets are allowed inside the test lab. Okay. So it is advisable to use them only. वैसे पॉकेट वाला मैं पहना हुआ एक बार, बट वो बहुत चूचू करते हैं बाहर. I mean unnecessarily का आपका आर्गुमेंट होगा. Candidates with जिप है या मेटल बटन्स हैं, ऐसे वाले न यूज करें. कार्डिगन्स या जैकेट्स वो नहीं. Candidates with metal implant, pacemaker, etc. in their body are required to bring a supported medical certificate of the same to the test center. Okay. So it is like, okay. So there are few people who are very prominent in their chats like Mayank. बोलता है आर्गुमेंट करने में मजा आएगा. हाँ आएगा तो सही, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन वो मजा दिमाग भी खराब कर देता है कुछ लोगों का यार. All personal belongings should be kept aside at this point. गेट पे आपको बाहर रुकवा लेंगे. वैसे हर स्कूल और हर कॉलेज जहां हम जाते हैं वहां वो लोग कुछ टोकन अमाउंट से लेके 50 रुपए का 60 रुपए का दे प्रोवाइड स्पेस कि आप सामान रख दो. लेकिन कैट अथॉरिटी सेज दैट इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कैट अथॉरिटी एट द टेस्ट सेंटर. It is only your risk that you are keeping your belongings there. Okay. So it is like you have to have faith on those guards and all. They only do that. So it's as such, it's not a system. Okay. No, water bottles are not allowed. Okay. I already told you what is allowed. Okay. I already told you what is allowed. So हाँ आप अपने व्हीकल में belongings बंद करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. That is not a problem. In fact, time representatives would also be available there at one or two centers. Somebody would be there. Everybody, and one person at every center would be there. They can help you out with probably, in case you need some emergency help that you need. कोई photocopy कराना है उसमें help कर देते हैं. I will also be available at one center. But आपको ये देखना है कि आपको वो आपका सामान नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का नहीं रख सकते. तो इसलिए वो आपको सिर्फ बता देंगे कि कौन सामान रख रहा है और where it is going on. So you can take their help also. Okay. So this is an important note which they've given. So do's, don'ts, and important note. Now on the day of exam, just see this. Okay, just see this. Arrive at test center, locate lab, scrutinize admit card, deposit mobile phone, bag, etc. Undergo mandatory frisking. This is the first row when you enter the gate. Get required document verification. Arrive at lab. Registration process will start inside the lab. Locate console.
once your registration is done, you will be asked to go to your console. Log into the profile page. They'll ask you to log into your profile page. You will have to verify and confirm profile information. You have to read instruction and agree to the declaration, and then you have to start the test. Once you start the test, you have to complete the test and submit it and register feedback. At the end, there will be a feedback that they'll ask you. Then return scribble pad, exit test lab, exit test center. This is the entire flowchart on the testing. So you'll be moving in this format. अब इससे ज्यादा तो मैं क्या समझा सकता हूँ, मैंने पूरा सब कुछ आज रिपीट आपके लिए एक प्री शो दिखा दिया. Okay. How to log in profile page. Okay, your admit card number will be your login to everything. You will have to just, there will be a small window that says enter your admit card number. The moment you enter your admit card number, you will enter to the test page. Okay. Basically, every console is specifically mapped to a individual candidate. तो वहाँ आपकी detail आएंगी, which is what they are saying. You verify and confirm the profile information that this is your system, that is where you are sitting, that there is no mismatch there. And typically, by the time the registration process happens, from the time of your arrival at the center and the registration process, it may be 1.5 hours overall time. So I would strongly advise, if anyone needs to use the washroom and all, do it till then. Exam में generally allow नहीं करते हैं तो someone will accompany, वो होगा और आपका भी time waste होगा, बहुत कुछ है. तो इन बिटवीन एक बार आप कभी ना कभी उस समय में बीच में वॉशरूम जरूर यूज कर लें. Usually they say that we do not allow bio breaks, but they say in case of an emergency you can go. So if you're going for a bio break, it is only, I mean, you are wasting your own time. So I also think that you will not go for a bio break. Okay, so let's move. Now, one more thing, last, which probably I'll go here and explain you. इस पॉइंट में रह गया था. हाँ, किसी ने क्वेश्चन ने पूछा है, एडमिट कार्ड, there are 2 pages in the admit card. I also know that there are 2 pages in the admit card. आप दोनों का प्रिंट आउट निकालें. ऑल्दो काम वो पहला वाला ही आता है, बट आप दोनों का प्रिंट आउट निकालें ना, दूसरे पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है. बस ये इंश्योर करना है कि 2 चीजें इंश्योर करनी है. द इमेज ऑफ योर फोटोग्राफ should be and your signature should be clear enough on the admit card. Number 1. Number 2, जो बारकोड है उस पे वो भी बिल्कुल साफ सुथरा प्रिंट निकल जाए. That's it, nothing else. ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है. It's very easy. आप जब एक बार दे लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, it's very simple. Okay, sir, over to you. What is scribe affidavit? Scribe affidavit is only for those people who are looking for a scribe, जिन्होंने अपने लिए किसी न किसी डिसेबिलिटी के चलते स्क्राइब मांगा है. टिपिकली वो जैसे आई वाला अगर वो है बहुत ही आपके ब्लाइंडनेस है, where you need someone else to mark the answers for you. So scribe is that person who accompanies you for that. तो वो अलग ही बैठाते हैं, अलग से वो रहता है. I don't think we had any such student with us here, so I don't think any of you might be requiring the services of a scribe. Okay, so anything else, sir, on this? बस ये जो मैसेज लिखा है स्क्रीन पे, गो हेल्दी कैट, यही करना है. एंड रिमेंबर, आपको फुल कॉन्फिडेंस से जाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे. और कॉन्फिडेंस ठीक है, लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक एग्जाम है, लेकिन ये टेंशन भी नहीं रखनी. एग्जाम कैट है, कैट के अलावा भी आप 4 और एग्जाम दे रहे होंगे. लाइफ में बहुत कुछ है. बस ये है कि राइट नाउ इन योर करियर पाथ जो आपने सोचा है, लग रहा है कि दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट रूट फॉर अ गुड करियर, फॉर योर लाइफ गोल्स, ओके, फॉर योर करियर गोल्स. तो हम पूरी कोशिश करें. सी अगेन, what is in your hands, you should worry only about that. It means give off your best. एग्जाम जब देके आए, फीलिंग होनी चाहिए मैंने जो मेहनत की थी, जो मेरे को आता था, I have given off my best. Now it is to the rest of the candidates. उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि मेरी परसेंटाइल उस पर बेस्ड है. So आप अपनी तरफ से अच्छा कर लो. That's all. That is in your hands. उसके अलावा कोई और चिंता मत करो. ये फीलिंग नहीं हो पढ़ ले होते, थोड़ा और करते, थोड़ा ध्यान दे लेते, थोड़ी गलतियां कम करते तो बेटर हो जाता है ना. सर लोग जो कह रहे हैं 6 महीने पहले भी कह रहे थे, वो तब सुन लिया होता. वो रिग्रेट्स ना रहे. इंपॉर्टेंट थिंग इज नो रिग्रेट्स. हमने मेहनत की है और जो मेहनत की है उसके हिसाब से आई हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट द पेपर. फ्रॉम माय साइड आई हैव गिवन ऑफ द बेस्ट आई कुड विद माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन. सबकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है.
ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबका एक जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, विच इज व्हाट ऑब्वियसली यू सी इन एम कैट्स, सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल्स हैं। और आपके ये भी है कि परफॉर्मेंस लेवल्स वेरी भी करते रहे हैं, तो अब आपको ये थोड़ा इन दिनों अगले 2-3 दिन में ये भी सोचना है, जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई थी, अगर आप एनालाइज कर पाए हैं तो आपने क्या किया था। वॉज इट तुक्का, किसी दिन अच्छा आ रहा है, किसी दिन खराब हो रहा है, जो खराब हुआ था तो क्यों हुआ था, अच्छा हुआ था तो क्यों हुआ था। If you can identify certain things, whether it was your mental state or the way you had approached the paper, उसका टाइम मैनेजमेंट कुछ अगर बेटर रहा था, तो वो चीजें हैं जो हमें अपने आप को इसमें अडॉप्ट करनी है और अप्लाई करनी है इन द एग्जाम। एंड दैट्स इट। जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं वो रेप्लिकेट करो। हमने आपको पहले भी कहा है, व्हाट यू हैव बीन परफॉर्मिंग इन एम कैट्स, rest assured, if you perform at the same level, the cat percentile will be much higher, and you yourself will be pleasantly surprised with the kind of results that you get. We have had, in cat 21, more than 100 students with final selections from Jaipur center alone, 100 plus final selections. So there are lots of students. There were, I think, about 170 odd students from Jaipur center who received IM calls. तो आप में बहुत सारे लोगों की IM कॉल्स आएंगी, रेस्ट अश्योर्ड। बस आपको एग्जाम जाके अच्छे से देना है, ठीक है। देन लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। कुछ तो चीजें रहती हैं, बस आपका अच्छा कर लिया, यू विल श्योरली गेट वेरी गुड स्कोर्स एंड परसेंटाइल। ऑल द बेस्ट। See, one last thing, while you are attempting the test, sometimes it looks ki it is very very difficult. So rest assured सबके लिए है, it is easy, rest assured सबके लिए है। किसी भी चीज पे ना ज्यादा उत्साहित होना है, किसी भी चीज पे ना ज्यादा दुखी होना है। We have to maintain a neutral state of mind with which we can attempt the paper in a fashion as if जैसा बॉल आ रहा है मैं वैसा खेलता जाऊंगा। मैं ये सोच के नहीं जा रहा कि मुझे कितना रन बनाना है, मैं ये सोच के नहीं जा रहा कि मैं कितनी बॉल्स खेलूंगा। जैसे आता जाएगा मैं वैसा खेलता जाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं, अगर बॉल डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ दूं, साइड से निकाल दूं, वेल लेफ्ट, अदरवाइज मैं आउट नहीं होऊंगा। दैट इज द होल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Okay, so don't go with the mindset ki I'll be attempting this number of question, I'll be getting this kind of a score. No, just go with the mindset that I'll attempt as it comes to me. Wish you all the best, guys. May God bless you. Keep rocking. Take care of your last 6 days. Wish you all the best. So play the ball on the merit of the ball, no fixed targets in mind. Okay, go with the flow and go rock. Okay, all the best. Okay, bye bye guys, good night.